My dear, first you watch the video opioid analgesic which I have sent to you, then you write notes about opioid receptor and morphine. Okay, in that video I have also described the opioid receptor and mechanism. Again I am detecting it. Opioid receptors, opioid interact stereospecifically with protein receptors on the membranes of certain cells in the CNS or nerve terminals in the periphery and on cells of the gastrointestinal tract and other anatomic regions. There are three major families of opioid receptor: mu, kappa and delta. The analgesic property of the opioid are primarily mediated by the mu receptor. However, the kappa receptor in the dorsal horn also contribute to some extent for the analgesic activity of opioid drug morphine. Okay, the different distributions of opioid receptors I have already detected in a video. That is one: brainstem, medulla thalamus, spinal cord, hypothalamus, limbic system, periphery and immunocells. Okay, then the general mechanism of opioid: activations of the opioid receptor decrease calcium influx in response to the forthcoming action potential. So this decrease release of excitatory neurotransmitter such as glutamate. Then another mechanism suggested the actions of morphine or opioid is that activations of the opioid receptor increase potassium efflux and decrease the response of the postsynaptic neurons to excitatory neurotransmitter. Then come to morphine. Morphine is the major analgesic drug contained in crude opium and it is the prototype strong agonist. These drugs show a high affinity for mu receptors and varying affinity for delta and kappa receptor. Then comes to mechanism, underline it. Opioid exert their major effect by interacting with opioid receptors in the CNS and in other anatomic structure such as in GIT and urinary bladder. Opioid causes hyperpolarization of nerve cells, inhibitions of nerve firing and presynaptic inhibitions of transmitter release. Morphine acts at kappa receptor in the lamina 1 and 2 of the dorsal horn of the spinal cord and it decreases the release of substances which modulate pain perception in the spinal cord. Pharmacological action. Number 1, analgesia. Morphine causes analgesia, full stop. It relieves pain both by raising the pain threshold at the spinal cord level and more importantly by altering the brain's perception of pain. Number 2 action, that is euphoria. EUPHORIA, euphoria. Okay, underline it. Morphine produce a powerful sense of contentment and well-being. Okay, सेटा को euphoria कहंती माने गोटे feelings of pleasant sensation ताकू तमे euphoria बोली कहिबो. मु ऑलरेडी एटा सेडेटिव हिप्नोटिक आ तुम जनरल एनास्थेटिक रे कहिछि ए टर्म मने पका. अल्कोहल नेले जो टाइप रो माइंड टा रिलैक्स हो जाए, जो टाइप रो गोटे वेलबींग मिले भाबंती माने सो कॉल्ड भी जहा हो से टाइप रो दिन सब कहंती यूफोरिया मींस गोटे फीलिंग ऑफ वेलबींग. ओके, देन नंबर 3 एक्शन, एमेसिस. Morphine directly stimulate the chemoreceptor trigger zone and causes vomiting. Then number 4 action,
histamine release. Okay, morphine release histamine from mast cell causing urticaria, sweating and vasodilation. Full stop. Because it can cause bronchospasm or bronchial asthma tendency. Asthmatic patient should not receive the drug. ओके पिला माने कहीं केमती हुए जेहेतु हिस्टामाइन रिलीज हुए कहीं तुम जानिच हिस्टामाइन इज ए सब्सटेंस जे कि इट इज ए पावरफुल ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर बाहरला माने ब्रोंकियल स्मूथ मसल कौन कंस्ट्रिक्ट हबो एंड आजमाटा प्रेसिपिटेट हबो आजमा विल प्रेसिपिटेट ओके खाली मॉर्फिन नुहे जे कोनोसी सब्सटेंस हिस्टामाइन इमीडिएट रिलीज करंती बॉडी भितर तीनटा मेजर जिनस हबो फास्ट हबो कौन भासो डायलेशन हम कहीं ब्लड भेसेल ले हिस्टामाइन रोल है भासो डायलेशन है ब्लड प्रेशर इमीडिएट कमी जीव मन पका एनाफाइलेटिक शॉक टाइम में तुमको कही एनाफाइलेटिक शॉक समय कौन हुए एनी ड्रग कंटेंट और इनसेक्ट बाइट जो एनाफाइलेटिक शॉक हुए इमीडिएटली मास सेल डिस्टेबिलाइज हो जाए डिस्टेबिलाइज एंड हाई अमाउंट ऑफ हिस्टामाइन रिलीज due to release of high amount of histamine immediate vasodilation is there immediate postural hypotension कंट्रोल करी हबो नाही जदि पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करिबो नाही हॉस्पिटलाइजेशन करी कि सही केस रे कोन दबो एड्रेनालिन गोटे फोड़ी देला माने प्रेशर एजेंट ब्लड प्रेशर टा बैलेंस हे जिवो लाइफ सेव हे जिवो सेहि पई मन रख हॉस्पिटल मान कर जतले पेनिसिलिन इंजेक्शन दिया जाए क्यूटानियस टेस्ट तो करा जाए ता सहित एड्रेनालिन भी लोड करके रखा जाय थाए कहीं ना स्थान काल पात्र विशेष रे इंडिविजुअल विशेष रे जदि हेला एनाफाइलेटिक शॉक ताल ताको काउंटरएक्ट करिवो एड्रेनालिन एटा भी मन पका तुम फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट कौन लिखिथिलो हिस्टामाइन एंड एड्रेनालिन आर फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ओके देन सेकंड स्टेप कौन हो तार हिस्टामाइन रिलीज हेले अर्टिकारिया कुंडे रैंपी हबो जानिचो जहा तुम एलर्जिक सिम्पटम देखैबो एंड थर्ड इज जदि बॉडी जीवो बेसी ताले ब्रोंकोस्पाजम कहीं ना ब्रोंकियल मसल को बढ़िया से हिस्टामाइन कौन कन्स्टिट्यूट कर रखे ब्रोंकियल आजमा प्रेसिपिटेट करे सेति पई जो माने आजमा पेशेंट सेही मानकू मॉर्फिन लाइक ड्रगटा दबाटा वाइज हबो नाही देन नेक्स्ट एक्शन रेस्पिरेशन अंडरलाइन मॉर्फिन कॉजेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बाय रिडक्शन ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर न्यूरॉन्स टू कार्बन डाइऑक्साइड this occurs with ordinary dose of morphine and increase according to dose means जेते जेते डोज बढ़िबो हला सेते सेते रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हे जीवो माने एटा गोटे डोज डिपेंडेंट इफेक्ट ओके देन नेक्स्ट पॉइंट लेखो फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिप्रेशन ऑफ कफ रिफ्लेक्सेस ओके बोथ मॉर्फिन एंड कोडेइन has antitussive properties full stop so generally cough center depress then another action right okay meiosis MIOSIS underline morphine causes enhanced parasympathetic stimulation to the eye resulting in pinpoint of pupil ओके छोट हो पिपुल कहीं तुम जान पिपुल साइज छोट हो देखी तुमको मियोसिस बड़ हो तले माइड्रासिस तुम आंटी कोलिनर्जिक सॉरी कोलिनर्जिक ड्रग पिलोकार्पिन कौन करूला मियोसिस करूला एंड आंटी कोलिनर्जिक ड्रग एट्रोपाइन कौन करूला माइड्रासिस करूला देन अनदर पॉइंट टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर अंडरलाइन इट डिप्रेस्ड टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर रिजल्टिंग इन हाइपोथर्मिया occur in cold surrounding okay next point you write action on GIT gastrointestinal tract morphine relieve diarrhea and dysentery by decrease the motility and increasing the tone of the intestinal circular smooth muscle full stop morphine also increase the tone of the anal sphincter overall result produced by morphine is constipation ओके एटा भी होची मॉर्फिन गोटे टिपिकल साइड इफेक्ट जो मानन को मॉर्फिन ट्रीटमेंट रखा जाए से मानकर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुए देन राइट एक्शन ऑन CVS मींस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मॉर्फिन कॉजेस vasodilation due to
अंडरलाइन करी तलकु लेख हिस्टामाइन रिलीज, देन डिप्रेशन ऑफ भासोमोटर सेंटर एंड डायरेक्ट एक्शन डिक्रीजिंग टोन ऑफ ब्लड वेसल। कहीं ना लास्ट टाइम कही लास्ट एक्शन ने हिस्टामाइन रिलीज करिवो मॉर्फिन, ऑब्वियसली हिस्टामाइन रिलीज हैला माने ब्लड प्रेशर टा डिक्रीज हबो। देन एक्शन ऑन लेबर, LABOR स्पेलिंग लेख, मॉर्फिन मे प्रोलॉन्ग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, फुल स्टॉप। देन एक्शन ऑन इम्यून सिस्टम, अंडरलाइन, ओपियोइड सप्रेस द वेरियस immune factors and increase the susceptibility to infection in experimental animals, both by direct action and indirect action mediated by the CNS, full stop। माने आमे जदि एक्सपेरिमेंटल एनिमल जोटा आम एनिमल हाउस अच्छी, रैट अच्छी, रैबिट अच्छी, गिनीपिग अच्छी, तांको ऊपर मॉर्फिन को देकी माने इम्यूनो सिस्टम को बा इम्यूनो सेल को आमे डिटेक्ट करबा, ताले जानिबा लॉन्ग टर्म मॉर्फिन यूज हला माने इम्यूनिटी तांकर ओवरऑल इम्यूनिटी तांकर कमी जीवो। काहे कि एटा एनिमल मॉडल बोली लिखिले, जनरली ह्यूमन बीइंग रे लॉन्ग टर्म अति दरकार न हले मॉर्फिन यूज होना। वीडियो क्लास रे मु तुमको कहिची ऑल पेरिफेरल पेन पे हमर NSAID यूज हुए, अनलेस एंड अनटिल इट इज एन इमरजेंसी मॉर्फिन should not be encouraged। Write down pharmacokinetic, underline, given orally morphine is adequately absorbed but extensively metabolized due to fast pass metabolism through the liver, full stop। Hence its bioavailability on oral administration is about 20 to 40%, full stop। Given IV it produces an immediate effects, full stop। Morphine is conjugated with glucuronic acid to form both active and inactive product, full stop। Morphine 6 glucuronide is more potent than morphine। पिला माने तुम जानि छ मैक्सिमम ड्रग, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग दे अंडरगो ग्लूकुरोनाइडेशन, मींस दे कंजुगेटेड विथ ग्लूकुरोनिक एसिड। ओके, कौन सेटा सेकंड फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। कहीं ना फर्स्ट फेज हमर कोन जाउथला ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डिसाइक्लेशन। बाकी जेते कंजुगेट रिएक्शन गला, कंजुगेशन गला, ग्लूकुरोनाइडेशन, मेथिलेशन, एसिटिलेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशंस, ग्लाइसिन कंजुगेशन, सब तमरो सेकंड फेज मेटाबॉलिज्म, एटा भी सेकंड फेज मेटाबॉलिज्म अंडरगो करे। ओके, देन राइट साइड कंटिन्यू करो। इन एडल्ट्स द प्लाज्मा टी हाफ ऑफ मॉर्फिन इज अबाउट 2 hours, full stop। Small amount of the free morphine and a large amount of conjugated morphine are excreted in urine, full stop। 90% of the administered dose is eliminated in urine within 24 hours। Then write down the adverse effect in point wise करके लिखो। नंबर 1 और गोटे आरो मार्क देकी लिखो। ओके, adverse effect रे लिखो। फर्स्ट पॉइंट रे सेडेशन, मेंटल क्लाउडिंग, lethargy, sometimes vomiting, and respiratory depression which occurs dose dependently or in a dose dependent manner, urinary retention। second point लिखो अंडरलाइन करके, idiosyncrasy and allergic manifestation। तापर नेक्स्ट पॉइंट लिखो apnea। ओके, एटा एक्चुअली कोठी हुए पिला माने न्यू बॉर्न मानको केस रे apneaटा हुए। काहे कि ना मदर को जदी लेबर पाई मॉर्फिन दिया जाइथिबो, तापरे सेटा कोन हबो ना फिटस रो ब्लड ब्रेन बैरियर ठीक से डेवलप जदी हेई नथिबो, इट रिचेस हायर कंसंट्रेशन मॉर्फिन, सेठी न्यूबॉर्न को apnea हबो। जोथि की माने ट्रीटमेंट करिया पे कोन दबा आमे क्लासिकल दिन से तो मु पचारुची, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट रे कहिथिली मॉर्फिन एंटागोनिस्ट के नालोक्सोन 10 mg/kg इंजेक्टेड कर देले माने दैट apnea विल बी टर्मिनेटेड व्हिच इंड्यूस्ड बाय मॉर्फिन। देन the classical point, last point लिखो, simple point टा खाली लिखो, tolerance and dependence। okay, then finally write down the uses, underline it। number 1 use लिखो as analgesic, underline। okay, common thing जानि छ। number 2 लिखो ता तळकू as or for pre anesthetic medication, underline करो, pre anesthetic medication। कहिथिली तुमको जनरल एनेस्थेटिक रे मने पका, जदी जनरल एनेस्थेटिक is not sufficient हो नहीं कौन पाई टू प्रोड्यूस कौन एल्जेसिया, ताहले मॉर्फिन दिया जीवो।
अगेन आई एम टेलिंग कहूची तुमको जनरल एनास्थेटिक रा तीनटा गुड कैरेक्टरिस्टिक कोन अनकॉन्शियस प्रोड्यूस करिया दरकार एनाल्जेसिक इफेक्ट दवा दरकार मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट दवा दरकार जदि ये तीनटा भितर कोनोसी इफेक्ट टिके आमे कम पाइले ताहले एडजुवेंटली सही ग्रुप रो ड्रग आमे नबा फॉर एग्जांपल जदि मसल रिलैक्सेशन ठीक हैला नहीं बाय इंडक्शन ऑफ जनरल एनास्थेटिक ताहले गोटे मसल रिलैक्सेशन निया जिवो दोज जनरल एनास्थेटिक व्हेन इंड्यूस्ड डज नॉट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ और कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ पेन रिलीविंग एक्टिविटी और एनाल्जेसिक एक्टिविटी सही जगह रे प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन हिसाब रे मॉर्फिन टा निया जाए मॉर्फिन नेला परे बैलेंस हे जिवो ओके देन थर्ड पॉइंट लिखो बैलेंस्ड एनास्थेसिया एंड सर्जिकल एनाल्जेसिया बैलेंस्ड एनास्थेसिया एंड सर्जिकल एनाल्जेसिया अंडरलाइन कर दियो तापरे नेक्स्ट पॉइंट रिलीफ ऑफ एंजाइटी एंड एप्रीहेंशन देन नेक्स्ट पॉइंट लिखो कफ बुझिल कहीं ना कड़ेन कथा कही कफ सेंटर को सप्रेस करुच्ची है एंटीटॉक्सिक यूज करा जाउची कफ रे यूज करा जाए तापरे लास्ट पॉइंट लिखो डायरिया अंडरलाइन कर ओके दिस मच योर नोट्स